Bismillahirrahmanirrahim. Generations of computers are today's topic. First generation of computer. The duration of first generation of computer is 1945 to 1956. Vacuum tubes used in the first generation of computer. These are very large in size, got hotted and burn out quickly. These are the points of the vacuum tube. Thousands of vacuum tubes consumed a lots of power, generated large amount of heat, large in size, very expensive, use machine language, punch card and paper tab, fastest calculating device, 5000 additions in a per second and 355 multiplication in a second. These are the examples of first generation computer: ENIAC, ADVIC and UNIVIC. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, we are going to discuss from the book First Generation of Computer. In 1951, the UNIVIC, Universal Automatic Computer, was developed as the first digital computer. कि सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर जो था वो 1951 में यूनिविक के नाम से डेवलप किया गया. Many UNIVIC machines were produced, the first of which was installed in the Census Bureau in 1951 in America and was used continuously for 10 years. और ये सबसे पहले प्रोड्यूस करके इसको 10 साल तक इस्तेमाल किया गया, चलाया गया. Then in 1953 the IBM International Business Machine Corporation introduced its first commercial computer, the IBM 701. IBM made a total of 19 of these computers. At the time, industry leaders felt that 19 computers should be sufficient to take care of the computing needs of American business. कि अमेरिका की जो कंप्यूटिंग नीड थी, कैलकुलेशन की जो प्रोसेसिंग थी, उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इसे यूज़ किया गया. बट दीज कंप्यूटर्स वर नॉट प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट कंपनीज बिकॉज दे वर वेरी लार्ज इन साइज, स्लो इन वर्किंग, much expensive, required special facilities and highly trained persons to operate them, so they were not highly demanded. कि ज़्यादा डिमांड नहीं थी इसकी क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, वर्किंग भी इसकी स्लो थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और इसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी रिक्वायर्ड थी. दीज कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. अब वैक्यूम ट्यूब का सबसे बड़ा इशू था जो कि लार्ज इन साइज़ और जिसने कंप्यूटर के साइज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था. अबाउट द साइज़ ऑफ अ लाइट बल्ब विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, वैक्यूम ट्यूब्स फेल frequently, so first generation computer were down, not working most of the time. This is basically another drawback of the first generation computer was machine language, only zeros and ones, in which programs were written for these computers. In first generation computers के लिए जो machine language बनाई गई थी वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करती थी. ज़ीरोज़ और 1 डिजिट इसमें यूज़ किया जाता था, तो जिसमें वो नंबर्स को, डिजिट को, लेटर्स को सभी को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करते थे और फिर उसे आगे प्रोसेसिंग में सॉल्व करते थे. हेयर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स. दीज कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज. दीज कंप्यूटर्स वर वेरी स्लो इन एग्जीक्यूशन और वर्किंग. These computers were not reliable because vacuum tubes failed frequently. Instructions were given to these computers in machine language, which is composed entirely of the numbered zeros and ones. First generation of computers were also very expensive. ये सभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहला पॉइंट था वैक्यूम ट्यूब का. दूसरे में था उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से कंप्यूटर के साइज़ को इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था. उसके साथ ये चलने में बहुत ज़्यादा स्लो थी और ये रिलायबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा जल्दी से गर्म हो के ये जल जाती थी, बर्न आउट हो जाती थी.
और इसके लिए जो मशीन लैंग्वेज बनाई गई थी वो ज़ीरोज़ एंड वंस पे काम करती थी बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो उसमें भी लोगों को मोस्टली प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो इस लैंग्वेज को नहीं जानते थे उस वक्त। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जनरेशन रही है। Dear student, in exercise question number 8 is related to our today's topic. Write down the characteristics of the first generation computers. In of question number 8, answer start from the main points we can consider as the characteristics of the first generation computer from point 1 to point 6, and question number 8 closed here very expensive. Thank you very much. Allah Hafiz.